And focusing on news from the national capital, even as we're seeing this unlock process, there's a lot of politics that's playing out again. A bitter war of words between the Delhi government and the centre. This over stalling the AAP government's ambitious step of ration delivery aimed to benefit over 70 lakh poor people. Kejriwal called the move politically motivated, blamed the ration mafia for influencing the centre. BJP in turn responded by hitting out at Kejriwal, asking him to buy food grains for his scheme and not divert subsidized central food grains to claim credit. Fresh flashpoint between centre and Delhi government. This time over AAP's ambitious doorstep delivery of ration scheme involving 72 lakh beneficiaries. Kejriwal's 2020 poll promise has hit a hurdle a week before its scheduled launch. Delhi government has claimed that centre has stalled its ration scheme, with the LG returning the file with political motivation. सारी तैयारी हो चुकी थी, टेंडर हो चुके थे, सारी तैयारी हो चुकी थी। बस अगले हफ्ते से ये शुरू होने वाला था, ये क्रांतिकारी कदम होने वाला था और अचानक आपने 2 दिन पहले इसको रोक दिया। Sources in the LG office, however, denied the charges, saying AAP government scheme needs centre's approval before it's implemented. It also mentioned a petition filed in Delhi High Court against the scheme. The BJP hit back, accusing the AAP government of misleading over-subsidized ration given under centre's Food Security Act and Pradhan Mantri Garib Kalyan scheme. BJP's Sambit Patra said that Delhi government has stalled one nation, one ration card, depriving migrant workers of cheap ration. मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है बंधुगण कि दिल्ली की सरकार ने इस विषय को मना कर दिया कि वो वन नेशन वन राशन कार्ड में आगे नहीं बढ़ेंगे और आज उन्होंने इस काम को आगे नहीं बढ़ाया है, जिसके कारण हजारों हजार जो मजदूर होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो माइग्रेंट लेबर्स होते हैं, आज वो राशन से वंचित रह रहे हैं। Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal also blamed ration mafia's influence for blocking the scheme. अगर ये घर घर राशन व्यवस्था लागू हो जाती ना सर, ये राशन माफिया खत्म हो जाता। पर देखिए ये राशन माफिया कितना ताकतवर निकला। दिल्ली में ये योजना अगले हफ्ते से लागू होने वाली थी और 1 हफ्ता पहले इन्होंने इसको खारिज करवा दिया। But workers at ration shops in Delhi fear the scheme will lead to job losses. अगर दिल्ली सरकार कहती है कि हम लोग माफिया हैं, तो दिल्ली सरकार की सरकार 7 साल से दिल्ली के अंदर चल रही है, तो उन लोगों ने अब तक क्या कदम उठाए? घर घर राशन योजना है, ये दिल्ली में किसी भी तरह से लागू नहीं होनी चाहिए। अगर ये लागू होती है तो हम लोग तो यहाँ पे काम इतना करा है हम लोगों ने, और इस कोरोना के दौरान भी हमने राशन वितरित किया है और तब भी सरकार हमारे पेट पे लात मारेगी। Amid the political blame game, will Delhi's needy be deprived of subsidized food grains? The blame game and the war between Delhi government and centre is now hampering one of the ambitious scheme which would benefit 7 million poor of the national capital. While this pandemic has suffered the poor class worst, the ration would be a biggest help. But the battle and the blame game between two authorities is now affecting people and their rights. In Delhi with Ritesh Desai, Ashutosh Mishra,